Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear students, idioms and phrases are very important and very tricky. और idiom और phrases जो है मैं अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ idiom क्या होता है, phrase क्या होता है. लेकिन आपका कोई भी टेस्ट हो, स्पेशली जो टीचिंग कैरियर पोस्ट के लिए जो भी टेस्ट होते हैं उसमें idiom और phrases स्टूडेंट्स के लिए बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं और बड़े ट्रिकी होते हैं. I have told you in my many videos that the question that comes in your paper, that is normally part of a sentence is underlined and you are asked to identify what does this idiom mean, what does this phrase mean, इस idiom और phrase का मतलब क्या है, या फिर underline किया होता है और आपसे पूछा जाता है कि जो underlined phrase है ये कौन सा है, noun phrase है, adjective phrase है, prepositional phrase है, adverb phrase है. तो आपके टेस्ट में एटलीस्ट 7 to 10 idiom और phrases अंडरलाइन किए होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने का कहा जाता है या फिर आपसे इसका मतलब पूछा जाता है कि जो idiom है इसका मतलब क्या है. तो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 30 वेरी इंपॉर्टेंट idioms and phrases that normally are given in your any sort of paper, चाहे वो कि आपका ईटा का पेपर है, चाहे कमीशन का पेपर है. idioms and phrases are very important and tricky. Let's get started. Number 1, the phrase to have your hands full, a very important idiom and I have selected from different past papers. To have your hands full, it means to be a sinner, to have too many things to do, to have plenty of wealth, or something related to fighting. The phrase to have your hands full, it means to have many things to do. When you have many things to do, many options to do, many tasks to do, the phrase is used to have your hands full. Sometimes you have to use your common sense to guess the meaning of a particular idiom or phrase. आप common sense से भी guess कर सकते हैं, but it needs practice. जितनी आपकी practice ज़्यादा होगी, जितनी आपकी study ज़्यादा होगी, आपके लिए guess करना, meaning guess करना भी आसान होगा. Next, every now and then, a very common phrase. It means often, always, occasionally, or everywhere. Every now and then means occasionally, kabhi kabar. Every now and then, I visit my friends every now and then. मैं कभी कभार अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाता हूँ. तो every now and then means occasionally. तो आपने इसका मीनिंग जब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आप इस तरह इनका मीनिंग्स जो है वो खुद गेस करेंगे. नेक्स्ट, आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली. आई टेक डाउन, व्हाट डज इट मीन? टेक डाउन, इट्स अ फ्रेज एंड इट मीन्स टू हाइड, टू रिमूव, टू पब्लिश और टू राइट डाउन. नॉर्मली टीचर दे आस्क देयर स्टूडेंट टेक डाउन in your notebooks. Take down means write down, to write in your notebooks. Take down, to take notice, to take notes. आपने notes ले लें, आप इसको लिख लें. Take down means write down. Number 4, fair field and no favor. That's a very common and very renowned idiom. Fair field and no favor. It means an equal chance for everyone, perfection, indifference in opinion, or popularity. Fair field and no favor, it means an equal chance for everyone. Fair field. आप इसको गेस कर सकते हैं, आप इसको देख के, क्योंकि idiom apparent meaning it's totally different और hidden meaning different होता है और आपका जो असल मतलब होता है वो hidden meaning ही होता है. तो fair field and no favor means to have equal chance for everyone, no partiality, no favoritism. Next, number 5, beat around the bush. Again, very common and very popular idiom, beat around the bush. It means try to hide in the bush or making excuses, to avoid talking about what's important or to talk rubbish. That's very renowned, very popular idiom, beat around the bush. Stop beating around the bush. Let's come to the point. It means to avoid talking about something important. असल मुद्दे पे ना आना, असल मकसद की बात ना करना, पॉइंट की बात ना करना और इधर उधर की हाँकना, इसके लिए बीट अबाउट द बुश. नॉर्मली आपको इस तरह सेंटेंस, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, मतलब की बात करो, क्या इधर उधर की मार रहे हो. तो ये इसलिए
इस कॉन्टेक्स्ट में ये इडियम यूज़ होता है. Number 6, be poles apart. It means either of the two poles, having nothing in common, leading position in a race, affects somebody greatly. We are having be poles apart. Be poles apart means having nothing in common. दोनों अलग अलग poles हैं, totally different, opposite to each other. It means having nothing in common. Number 7, the phrase be all ears. I am all ears. It means having long ears, listen with interest, suspect something, being good listener. I am all ears. So be all ears means listen with concentration, listen with interest. It means listen with interest. Number 8, see eye to eye. Again, a very common idiom, see eye to eye. It means disagree, agree, meet or dislike. See eye to eye means agree. Get agree with somebody. किसी के साथ agree होना, मुत्तफिक है ना, इस ये idiom यूज़ होता है see eye to eye. Number 9, flogging a dear horse. Flogging a deer horse. What does it mean? आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा. Flogging a deer horse. This idiom means what? Repeating our request, making him see reason, beating about the bush. Or the correct option is flogging a deer horse mean repeating our request. Flogging a dead horse. Flogging a dead horse means repeating our request, making him see reason, or beating about the bush. The flogging a dead horse means repeating our request. Option 4, wasting time in useless effort. मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये दैट्स वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इडियम. तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन वेस्टिंग टाइम्स इन यूजलेस एफर्ट. फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स कॉमन सेंस से भी आप देखें तो जो था ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था मुझे. वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट. फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट. फजूल कामों में अपनी एफर्ट ज़ाया करना, दैट इज़ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. Number 10, feel good. I am feeling good. It's a bit simple. Showing goodwill to someone, become happy or confident, know or sense something, or move along very carefully. So feel good means become happy. I am happy. I am feeling good. It's very simple. A pipe dream. Again, it's a very common idiom. A pipe dream. It means a pleasant dream, a bad dream, an impracticable plan, or none of these. तो पाइप ड्रीम मीन्स एन इम्प्रैक्टिसेबल प्लान. ऐसा प्लान जो प्रैक्टिसेबल ना हो, जिसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सके, जिस पे काम ना हो सके, दैट इज़ अ पाइप ड्रीम. राइट. नंबर नेक्स्ट, ह्यूमन सर्विसेज मीन्स. अगेन एन इडियम. ह्यूमन सर्विसेज, फ्री सर्विसेज, help in need, government services, or none of these. The human services mean it's an idiom, help in need. किसी की ज़रूरत में मदद करना, that's human services. Next idiom is pass the buck. Pass the buck. Very popular idiom. It means keep something in hand, to evade responsibility, to warn or come to know someone's secrets. Pass the buck, it means to avoid responsibility. अपनी ज़िम्मेदारी से भागना, उससे escape करना, उससे दूर होना, that is to pass the buck. अपनी बक को दूसरी तरफ पास करें. तो ये तो कॉमन सेंस से भी इसको गैस किया जा सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सेंस बनता है. नंबर नेक्स्ट, इफ़ यू हैव अ फिंगर इन द पाई. दिस इज अगेन एन idiom. If you have a finger in the pie, so you are dash in something, interested, involved, puzzled, or none of these. So if you have a finger in a pie, you are involved in something. तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. इफ़ यू हैव अ फिंगर इन पाई, दैट्स एन idiom which are usually used to convey this meaning that you are involved. आप इसमें इन्वॉल्व हैं. You are have a pie in the, you have
finger in the pie. It means that आपका कोई रोल है, आप इसमें इन्वॉल्वमेंट है. Next, to keep one's temper. Again, very popular idiom. To become hungry, to be in good mood, to preserve one's energy, or to be aloof from. The idiom to keep one's temper, it means to be in good mood. जब आप अच्छे temper में, it means that you are in a good mood. Again, that's a very common idiom that is normally you see in your such kind of ETEA NTs papers. Again, very common idiom, hitting the nail on the head. It means performing a task with exactness, hurting someone without letting them know, taking a very dangerous risk, scold someone for their mistake. So hit the nail on the head. It means to perform a task with exactness. कोई काम सही तरीके से exactness, precisely, अच्छे तरीके से किसी काम को करना. To hit the nail on the head. कील को उसके सर पे सही तरह ठोंकना. तो इसका सेंस बनता है इस इडियम के अंदर भी, अपेरेंट मीनिंग के अंदर भी आपका जो हिडन मीनिंग है वो छुपा हुआ है, नज़र आ रहा है. तो आप इससे उसको देख के भी समझ सकते हैं, गेस कर सकते हैं इसका मीनिंग. तो टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू परफॉर्म एन एक्शन विद एग्जैक्टनेस. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन सम इडियम विदाउट एनी ऑप्शन. द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स. व्हाट डज इट मीन? This is again an idiom, the best of both words. It means that you can enjoy two opportunities at the same time. The best of both words. You can enjoy two opportunities at the same time. You have two options, two opportunities, and you are enjoying both. So for such a situation, in such a context, this idiom is used, the best of both words. Next, speak of the devil. Again, a very common, very popular idiom. It means that you are just talking about actually appears at that. Speak of the devil. This means that the person you are just talking about actually appears at the moment. Speak of the devil and devil is here. आपने सुना होगा आम तौर पे ये बोला जाता है जब आप किसी की बात कर रहे होते हैं और वो बंदा उसी वक्त at that very moment वो appear होता है. Think of the devil and devil is here. तो ये इस सेंस में यूज़ होता है स्पीक ऑफ द डेवल. जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन एंड ही अपीयर्स ऑन दैट वेरी मोमेंट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसी लम्हे वो सामने आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये बोला जाता है. सी आई टू आई, शायद ये पहले भी गुजर चुका है. सी आई टू आई मीन टू एग्री विद समवन. किसी के साथ एग्री करने के लिए सी आई टू आई ये इडियम यूज़ होता है. नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून. अगेन वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर idiom, once in a blue moon. It means rarely, seldom, kabhi kabar, an event that happens frequently. I only go to cinema once in a blue moon. So it means that aksar, yes, often, rarely, बता चुका हूँ, seldom, rarely, kabhi kabar, once in a blue moon, seldom, rarely, occasionally. तो इस सेंस में ये यूज़ होता है वंस इन अ ब्लू मून. अ पीस ऑफ केक. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमन इडियम. अ पीस ऑफ केक, समथिंग विच इज़ वेरी ईजी. दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू. दिस प्रोजेक्ट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट इंग्लिश इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. मेरे लिए बहुत ईजी है. अ पीस ऑफ केक, वेरी ईजी. नंबर नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. बिल्ली को थैले से बाहर आने दो. लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, इस राज को सामने आने दो. तो बिल्ली का थैले से बाहर आना, राज अफशा हो जाना, राज सामने आ जाना. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए टू रिवील द सीक्रेट, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, इसके लिए यूज़ होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. टू किल टू बर्ड विद वन स्टोन. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इडियम. टू सॉल्व टू प्रॉब्लम एट वंस. दो प्रॉब्लम को आप एक साथ हल कर लें. इट मीन यू आर किलिंग टू बर्ड विद वन स्टोन. एक तीर से दो शिकार, जैसे हम ये मुहावरा इस्तेमाल होता है, एक तीर से दो शिकार. तो आप दो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आप एक साथ हल कर लें. तो इस सिचुएशन में ये यूज़ होता है टू किल टू बर्ड विद वन स्टोन. नेक्स्ट इज टू कट कॉर्नर्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इडियम. टू कट कॉर्नर्स, to do something badly or cheaply.
कोई काम बुरे तरीके से, भद्दे तरीके से, ऑकवर्डली करना, उसके लिए यूज़ करते हैं टू कट कॉर्नर्स। Number next, to aid insult to injury. Again, very common, very popular, very interesting idiom. To make a situation worse. This is used for a situation that is being made worse. जब आप किसी situation में उसको और उसको पहले से बदतर बना दें, तो it means that you are adding insult to the injury. किसी situation को, किसी मामले को, किसी issue को पहले से भी उस हालत से भी बदतर बना देना, उसके लिए यूज़ होता है टू एड इंजरी टू द इंसल्ट, टू एड इंसल्ट टू द इंजरी। नंबर नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दैट इज़ अ मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन गुड हैपनिंग लेटर ऑन। बजाय जो चीज़ आपको बुरी लगती है लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छी साबित हो, अपेरेंटली इट लुक्स बैड फॉर यू बट लेटर ऑन इट प्रूव्स टू बी वेरी गुड फॉर यू, उसका रिजल्ट आपके लिए बेहतर हो, तो वो चीज़ आपके लिए अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अपेरेंटली इट डज नॉट सीम अ गुड थिंग फॉर यू बट एक्चुअली इट इज़, एक्चुअली इट हैपन्स टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो ऐसी चीज़ के लिए हम कहते हैं ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Dear students, these were some very important idioms and phrases that I have discussed today, or I have told you that idioms and phrases are very, very much tricky and confusing, and it's totally based on your practice. The more you study, the more perfect you become. Perfect in the sense that you have a clear concept, a clear sense of the ability to guess the meaning of these idioms and phrases and when they appear in a कॉन्टेक्स्ट। जब किसी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो आपकी प्रैक्टिस से आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग वर्ड्स यू कैन गेस योरसेल्फ। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ टेस्ट, चाहे वो ईटा NTs के टेस्ट हैं, आपकी CT PST IT TT ये टेस्ट हैं, तो इडियम एंड फ्रेजेस ये लाजमी आते हैं। तो आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, स्टडी करें और इंशाल्लाह आपके आने वाले पेपर में ये आपको हेल्प करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।